Because I remember when I came for the interview, I was not selected. Sorry. I actually had to take around 8 attempts to clear. Sir, like you are associated with this Tata Group since 1995. मैं born भी नहीं हुई थी उस time पर. सैलरी के पीछे क्यों जाते हो तुम लोग? Salary is a byproduct of your hard work. So I have spent around 28 years in Tata Motors and last year I switched over to Tata Powers. एक CV आता है multiple attempts वाले. क्या उन्हें मौका दिया जाता है? Definitely. टाटा कंपनीज कॉल्स बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, and good salaries. I mean double salary, triple salary, but even the government wants more CS candidates, which many companies don't have. 8 attempts and you never thought of giving up. And today, if you say a company secretary has become a KMP, that you should clear your final exams and then you should do a training. तो गाइस क्या आप लोग ऐसा सोचते हो कि जब एक बार हम सीएस बन जाएंगे तब हमारी इंटर्नशिप या फिर जॉब बड़े बड़े एमएनसीज के साथ करेंगे लाइक टाटा ग्रुप? बट आपको नहीं पता कि ऐसे कंपनीज को अप्रोच कैसे करते हैं, इसमें कैसे टाइप के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, कौन से स्किल्स होनी चाहिए ऐसे कंपनीज में काम करने के लिए. तो आप एकदम सही पॉडकास्ट पर आए हो, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है CS विस्पी पटेल सर, जो कि टाटा ग्रुप के साथ एज अ CS 28 years से एसोसिएटेड है एंड ही इज नाउ द हेड CS ऑफ टाटा पावर्स लिमिटेड. वो खुद बताने वाले हैं कि वो कैसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं, कौन से स्किल्स होने चाहिए, और इन डिटेल में अपनी जर्नी भी शेयर करने वाले हैं. ऑल्सो देयर इज अ पावरफुल एडवाइस फॉर यू ऑल एट द एंड फ्रॉम CS विस्पी पटेल सर. सो गाइज वी आर सिटिंग एट द बॉम्बे हाउस, टाटा ग्रुप हेडक्वार्टर्स. मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है सर, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी इंटरव्यू देने के लिए, मेरे लाइफ का फर्स्ट एवर इंटरव्यू विथ विस्पी सर इटसेल्फ. सो एंड नाउ आई एम कमिंग हियर फॉर हैविंग दिस पॉडकास्ट, बट इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पॉडकास्ट होने वाला है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चंस मैं जनरली सबको पूछती हूँ हमारे गेस्ट को, दैट why you chose CS at that time, and अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप खुश हो ये फील्ड सिलेक्ट करके? The second question का answer is yes. I am very happy that I have chosen this field. When I started my educational journey, I wanted to become a chartered accountant. So Oh, I'm talking about maybe in 1995 or 96. So what had happened is we four of our friends, हम लोग जाके अकाउंट्स की बुक लेके आए, CA की सब बुक्स लेके आए थे, एंड वी स्टार्टेड स्टडीइंग. देन वन डे एक फ्रेंड का जो फादर है, ही जस्ट टोल्ड अस कि CA अभी बहुत जन करते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन, why don't you think of doing CS, which is a very upcoming field and it is a very promising. noble profession and you will grow in that field. So we said let us give it a try. So उस हिसाब से हम लोग CA की बुक्स दे दी, we returned it back and we brought CS के books and then I gave exams and all, and today I am where I am. So very happy Oh, with the decision taken that time. It was not my decision, somebody had just guided at that time and I am happy. दैट्स ग्रेट सर. मतलब उस टाइम पे भी पीपल वर सेइंग कि CS ले लो, स्कोप बढ़ रहा है. In fact, उस time पे there were a lot of difficulties. In today's world, you have got YouTube videos, influencers like you, but in our time we had no classes. So even when I did my CS, there was no classes, no good books to refer to. Oh, So YouTube तो था ही नहीं तभी. And then I and my friends, few of them, we went to CA के classes just for the financial management subject. So we were the only four or 3 or 4 of us. We used to sit there, attend, and then come out when our subject was over. So I mean, सेल्फ स्टडी करके यू self study. ओके. तो सर लाइक यू आर एसोसिएटेड विद दिस टाटा ग्रुप सिंस 1995. मैं born भी नहीं हुई थी उस टाइम पर. 1996. 1996. So I gave my inter exams CS के. उसके बाद then I went to the institute WIRC and I saw Tata Steel, Tata Motors and maybe one company. So I applied all three. Tata Motors, I got a call just to come for an interview for a management training. 15 months तभी था. Okay. 15 months management training.
and I got selected. And so, and then since then I'm with the Tata Group. So I've spent around 28 years in Tata Motors, and last year I switched over to Tata Power. So I got this opportunity as the company secretary, which बट सर देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि तब से लेके अब तक यू आर एसोसिएटेड विद टाटा, हाउ इट वेंट? so when I joined that time, CS was relatively new field. There were no compliances such as it was just a normal administrative job. Board meeting का papers बनाओ, board meeting करो, minutes बनाओ. इतना फॉर्म फाइलिंग भी नहीं था. And today, if you say a company secretary has become a KMP, he is one of the three people: CEO, CFO, and a company secretary. राइट। And during this time, the compliances have increased. पहले Companies Act 1956 था, जो 2013 हो गया. हाँ। And now we have to refer to SEBI LODR, we have to refer to SEBI PIT, we have to, I mean, so many rules and regulations. In our time, like it was Companies Act है, उसमें जो है वैसे ही रहेगा, it will not change. But after 2013, every day something is changing, some rules, some regulations. So it is very challenging now. One of the challenges which I faced and which I also try to discourage when students come to me for an management training is that you should clear your final exams and then you should do a training. Because in my time, I cleared my inter first attempt, then I went and joined Tata Motors, and then with work pressures and all, and you know, lot of you are new to the field, you don't know how to handle people, how to handle work and all, and you have to study also. You may not get time to study. So I actually had to take around 8 attempts to clear, but I was very determined that yeah, this is the field which I have chosen. So एक दिन तो पास हो ही जाएगा ना. वाओ। So that's वाओ। that's how I did. 8 attempts and you never thought of giving up? No, I did not think of giving up. I had just two quotes in front of me. I can, I will. So ठान ली थी कि मैं करके रहूँगा. And other thing was quitters never win, winners never quit. So I never quitted. I mean, that was the वाओ। inspirational quote which I The used to type follow. of loyalty you have, it's like कि आपने शादी ही कर ली। हाँ, शादी कर दी. टाटा ग्रुप को ही आप देखो ना. हाँ। आज Tata Group also, whatever profits you have, you give it for charity. Most of the profits go to charity. It was a pioneer before even government came out with the regulations. Tata Group did lot of CSR activities. So I mean, वाओ। it was a dream for me as a school boy. You know, in my subject, I had read that Tatas did lot of CSR initiatives and all, and it was a dream कि एक दिन अगर aspirational था कि काम करने मिला तो it will be very good. And I got a job, so then why should I leave? ओके। मतलब my next question was this only कि आपने कभी सोचा नहीं जॉब शिफ्ट करने की, but now I I have was done. happy with the culture here in Tata Group. It was a nice culture, and the way the group is, I did not feel like. हाँ, definitely calls बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, and good salaries. I mean, double salary, triple salary. But life में I don't. My personal thing is you should not chase money because money doesn't give you happiness. आज जो भी सैलरी है 3 गुना भी तुम्हारे पास सैलरी रहेगी, but if you are not happy, Happy. you are not comfortable. I mean, you don't spend time with your family, then it doesn't make any sense. Money is not everything. It's like high level of loyalty which is which you are portraying, and like मैं भी इंस्पायर्ड हुई क्योंकि आजकल सब यही करते हैं कि यार चलो जंप मारते हैं, एंड सब यही इन्फ्लुएंसर्स भी एडवाइस करते हैं. So the other thing is कि when I joined Neha, that time you had to be loyal. That time there was no concept of changing jobs frequently. Oh. So in my time, people used to join a company, retire from that company. It was a normal thing. Today, if somebody comes and speaks with me or takes my advice, I will say कि तुम 5-6 साल एक company में करो, and then you change. Because when you change a company, you get different type of work to be done, different people, and you grow also. So today, if you ask me, my advice is don't stick. But now I'm an old timer, you can say. So I will stick with the loyalty. बट सर एज यू मेंशन कि आपको 8 अटेम्प्ट्स लग गए थे क्लियर करने में, सो अभी इफ यू वांट टू सिलेक्ट समवन
फॉर सपोज ट्रेनी आती है आपके पास, एक सीवी आता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले, क्या उन्हें मौका दिया जाता है? टाटा डेफिनेटली। कंपनीज जैसे टाटा करते कंपनी को कोई भी कंपनी दे सकती है। I mean, if you are good enough, you are hardworking, you're knowledgeable, and you have the determination to, हैं? succeed as a company secretary, I mean, वो मायना नहीं रखते हैं. हम्म And if such candidates come, I will have a soft corner for them because I have also struggled. So ओह I have nothing like that. I mean, I will be more happy that even after giving so many attempts, that person is still not given up. He has said, या okay, no, I will try and I will become a company secretary. So मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स इज नॉट एट ऑल अ बैरियर। not at all. These are professional exams, Neha. I mean, हम्म in such type of exams, you have to give many attempts. It is not स्कूल कॉलेज जाके तुम पास हो गए, वैसे नहीं होता है. तो सर अब एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी हो या कोई ट्रेनी हो, इफ दे वांट टू वर्क विद टाटा ग्रुप और बिग एमएनसीज, हाउ कैन दे एंटर इनटू दिस? My advice would be you start with a small company, you start with a practicing company secretary, you gain experience, हम्म then you think of going to and joining a big company. Even if you ओह join an MNC today, you will be see joining in a junior grade. हम्म And in a big company, there are so many people. Like in हम्म Tata Power, I have got around 10-15 people working हम्म with me. So then the work gets divided. So one हम्म person will only do RPT, one person will only do filing or interacting with हम्म shareholders. But when you go and join a small company where there is not much work, हम्म so there I see many people, they do CS work, they also do admin work, they also do CSR. I mean, because the work is less, you go and do different work, different type of work. So you grow as a person, definitely. And then when you have that exposure, when you have that inclination, you can switch over and try in an MNC or a, say, big group. आई वाज लाइक इवन आई डिड लाइक दिस, इट वाज नॉट बिकॉज आई वांटेड टू, बट मजबूरी में, क्योंकि उस टाइम पर कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी, सो आई ऑल्सो स्टार्टेड विद अ स्मॉल कंपनी, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड एक्सपोजर एंड उसके बेसिस पे नाउ आई गेट गुड अपॉर्चुनिटी, सो इट्स कंप्लीटली ट्रू, आई कैन वाउच फॉर व्हाट यू सेड। Definitely, हम्म definitely. It's not a shortcut to success. You have to do hard work, काम करो, and then you यू will विल get ग्रो you will get through. या It is not that difficult. सो सपोज कोई हमारे जो व्यूअर है वो आते हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए, सो हाउ यू सिलेक्ट अ कैंडिडेट कि इसको मैं लेता हूँ? So like I said, the same thing which I do for trainees also. So that person should have good knowledge. He should try to keep himself updated with हम्म, things. ऐसा नहीं कि हाँ मैं अभी CS हो गया तो तो हो गया। बस. In today's generation, I mean today you see last month's rumor verification करके आया था. हाँ So it is a new thing. Even we have to study. हम्म Even after being a CS for so many years, I have to continuously study, keep myself updated. So that appetite should be there, that curiosity should be there कि हाँ नया क्या आ रहा है. Every day you keep yourself updated. So then when you select a candidate, you should see whether he has those skills or not, whether that person will do well, हम्म in the job or not. बिल्कुल, बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई केम फॉर द इंटरव्यू आई वाज नॉट सिलेक्टेड Sorry. and that was my first ever interview and I faced rejection although getting all India rank, but now I came to know why, because I don't know sir you remember or not, but you asked me one question ki how do you keep yourself updated with the laws? Is it? Yeah, and I told that I check MCA website. Then you told कि अच्छा आज एक amendment आया था बताओ, and I was not able to answer So you lied. that. अरे मॉर्निंग में I was having interview, so I directly came to for the interview, and morning में that amendment came. So So many times what happens is when you are going for an interview, usually the interviewer will ask you questions about latest things which has happened. yeah, So उस दिन में क्या amendment हुआ या maybe last week में क्या हुआ. So they test like that. So if one way to prepare is to be updated, see companies है कुछ amendment आया है कि नहीं, see LODR if you're going for a listed company का interview. So बिल्कुल that is one way you can keep yourself updated. And the second thing is it was good that you got rejected. If you had joined Tata Motors today, you would be very comfortable in a Tata group, and your students would have, not benefited from this. So it is destiny, Neha. I mean, CS बन के भी CS का ही काम करना है, वो उतना मायने नहीं रखता. I mean,
after become on CS, even if you branch out to something else, CSR or something which Hmm. interests you more, you have passion for, I mean, it's well Okay, done. हाँ, definitely, sir. Thank you for your kind words. But you know, a lot of students get demotivated by this कि CS में कोई scope नहीं है, ऐसा. सीएस में तो बहुत सारा स्कोप है आजकल तुम देखो सीएस में सीएसआर है, सीएस में कंप्लायंसिस है, रिस्क मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तुम एडवाइजरी रोल्स कर सकते हो. नाउअडेज प्रैक्टिसिंग सीएस गॉट सो मेनी पावर्स, इतने सारे हम्म. पीसीएस बन के तुम कर सकते हो. सो आई मीन आई डोंट अग्री विद दैट के स्कोप नहीं है. मेरे हिसाब से तो इन टुडेज वर्ल्ड इट इज ट्रेमेंडस स्कोप फॉर company secretaries. Even the government wants more CS candidates, which many Hmm. companies don't have. So Hmm. I mean, it's a good field to be in today, Okay. in And today's do world. you think it will grow in future? Definitely, Hmm. definitely, it will definitely grow in future. Okay. तो सर एक मोटिवेशन फैक्टर कि सैलरी कितनी मिलती है हेड सीएस को. सैलरी के पीछे क्यों जाते हो तुम लोग? सैलरी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, नेहा. एक Depends. So, see, I don't know whether you guys read annual report or not. Annual report read करना भी बहुत जरूरत है. So I always advise जो भी कैंडिडेट्स आते हैं फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आई टेल देम कि तुम अच्छी अच्छी कंपनी, लिस्टेड कंपनी के एक एक शेयर बाय करो. नाउ वन शेयर इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. टुडे इफ यू सी टाटा पावर 450 रुपीज है, और सब कंपनीज का मे बी 200 है, 1000 है. एक एक शेयर बाय करो एंड देन यू, so definitely you will get all the annual reports, you will get all the communication. This is what you're going to do when you become a company secretary. You read those, you gain knowledge, you visualize yourself कि once you come to that position, this is what you have to do. उसमें सैलरी भी रहती है एनुअल रिपोर्ट में. सो इफ यू ओपन those pages you will find it. So to answer your question, for a listed company, a person having 15 to 20 years experience, it can be in any range between 60 lakhs to it can also go to 3 crores. I mean, Yeah. depends. सर डेफिनेटली, मतलब ये मैंने एनुअल रिपोर्ट में बिल्कुल पढ़ा है कि गुड लिस्टेड कंपनीज गिव करोड्स में दे गेट पे. Yeah, but then you have to be capable for that. ऐसे या नहीं है कि हाई डिमांड मुझे करोड़ रुपए की सैलरी चाहिए, but your performance also pays. And the बिल्कुल. more higher you go in the field, in the profession, like you become a CS of a listed company, there are a lot of compliances. So stress level is also more. So it's not as if कि हाँ उनको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जो पोजीशन में है उनको ही पता चलता है स्ट्रेस कितना रहता है. एवरी डे समथिंग और द अदर इज हैपनिंग. सो वो सब भी याद रखना पड़ता है. सर जैसे आपने स्ट्रेस की बात की, आई वुड लाइक टू नो कि आपका दिन कैसा दिखता है. हाउ डज अ डे लुक्स लाइक? Day now my I come to office. I come to office early. I official time is around 9 o'clock. I come by 8:30 or 8:15, and I come and then I start clearing my mails. So I check my mails. As a company secretary, one of the main thing is you will get a lot of mails, mainly from shareholders, from other departments, from government authorities. So you have to be constantly checking your emails, replying to them, forwarding it to people. So I start my day with that. And then I see what is there during the day. So if I've got board meetings coming or committee meetings coming, then I have to start preparing the agenda notes, start liaising with other departments to take items for them, plan it out. फिर डायरेक्टर से बात करनी होती तो वो होती है. फिर कंप्लायंसेस देखने पड़ते हैं, आज कुछ फाइल करने हैं कि नहीं स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो देखना पड़ता है. सो एंड टाटा पावर के अंदर देर आर अराउंड 105 110 सब्सिडरी कंपनीज. तो उनमें भी थोड़े जन सीएस है जो इनडायरेक्टली रिपोर्ट्स टू मी. सो उनके भी कुछ क्वेरीज रहती है, उनका ओवरसाइट होता है. सो दैट आल्सो वी नीड टू सी. सो नेवर एंडिंग. it's an busy day, you can say. It's a तो busy day. हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे होता है फिर? मैनेज करना पड़ता है. यू हैव टू फाइंड टाइम. व्हेन आई जॉइंड आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मैं तभी टाटा मोटर्स में 9:39 आई मीन 9 o'clock till 5 o'clock वाज द वर्किंग आवर्स. तो आई वाज वेरी कि मैं 5 बजे निकल जाऊंगा, फिर मैं घर के लिए टाइम स्पेंड करूँगा. तो दैट वर माय इनिशियल डेज, बट नहीं होता. आई मीन, so today also, like I'm in office for maybe around 8 to 10 hours, not 8, maybe 10 hours only.
and I Oh. leave. I try to leave by 6:30, Mm-hmm. but it depends upon if meetings are there and how the workload is there. And once you're home, then you spend some time with your family, with your children. Mm-hmm. बट ऐसे भी नहीं है आज कोविड के बाद तो ऐसे हो गया कि घर पे भी तुम जाओ तो यू आर कंटिन्यूसली ऑन काम व्हाट्सएप आता यू ही आर है, हाँ. कंटिन्यूसली ऑन टीम्स कॉल यू आर कंटिन्यूसली डूइंग Hmm. थिंग्स सो यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर व्हाट यू लाइक हाँ बट Priorities. एक एडवाइस है कि तुम विच आई वाज गिवन बाय माय बॉस देन Hmm. सो वंस यू लीव योर ऑफिस ट्राई टू डिस्कनेक्ट अगर आज ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ या तुम्हारे बॉस तुम पे चिल्ला रहे हैं तो घर पे जाके वो सेम टोन से तुम फैमिली मेंबर्स पे मत जाओ तुम ऑफिस की बात ऑफिस में Hmm. और वैसे ही घर की बात घर अगर पे, घर में बीवी हाँ. ने चिल्लाया बच्चे लोग ने कुछ परेशान किया तो हाँ. ऑफिस में आके फिर तुम्हारे सब सबॉर्डिनेट को Hmm. मत तुम फायर करो तो Oh. आई मीन ट्राई टू Hmm. डू दैट देन यू आर सॉर्टेड आउट Okay. and Boundaries. weekends are there sundays are there for you try not to work on sundays Hmm. हाँ रूटीन मेल्स क्लियर करना या किसी का एक बार फोन कॉल आ गया तो वो चल जाता है बट देन यू शुड डू इट ओके. तो सर, जो सीएस बच्चे हैं, मेरे सीएस है, सीए है, जो बच्चे देख रहे हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि उनमें क्या स्किल्स अभी से डेवलप करो ताकि आगे जाके आप एक कॉम्पिटिटिव जो हमारा एरा बन चुका है उसमें दे कैन सर्वाइव. स्किल्स तो लाइक आई सेड कि यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड विथ हम्म. योर नॉलेज हम्म. आजकल तो इट्स अ वेरी मेन क्राइटेरिया हम्म. अभी हम लोग बात भी कर रहे तो नया कोई सर्कुलर आ जाएगा तो इट्स दैट डायनामिक हाँ. हम्म. सो एक बार अपडेट करो यू ट्राई टू रीड हम्म. ट्राई टू इंटरप्रेट इट क्या है क्या नहीं हम्म. एंड देन तुम्हारा काम डेडिकेशन से करो इफ यू आर डेडिकेटेड हार्ड वर्कर देन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट हम्म. यू डू दैट you should think also as a company secretary you need to strategize क्या करना क्या नहीं सबको एडवाइस कैसे देना है the board of directors they depend upon you कि हाँ ये नया कुछ आ गया तो you tell me what is your interpretation तो हम्म. तुमको सोचना पड़ेगा तुम्हारे दोस्त लोग से बात करना पड़ेगा तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन है तो हम्म. वो सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए Oh. and I would suggest you always be humble in life that is what I learned in this group हम्म. so when I joined I mean the chairman was Mr. Ratan Tata then we had Mr. Nani Palkhiwala all legends were there Rusi Modi Wow. Sunawala I mean there are a lot of people हम्म. and the one thing which I noticed in them they were very humble so even we as trainees they used to talk to us so nicely so softly never shout make us understand कुछ डाउट है तो they would clear that हम्म. doubt rather than getting irritated कि नहीं Oh. ऐसे नहीं तो you have to I try to do that I try to be as humble as possible so that is I something know, sir, which that's amazing. You made me so comfortable during my first interview. I still remember as soon as I came, you asked me you want some water or tea, and that was my first ever experience of interview. It was very humble, very positive, and उसके बाद जो मेरे interviews हुए थे वो बहुत but सब. that is it you guys this is your first interview you come for the first time you have some apprehension कैसे हाँ, जाएगा हाँ. तो I think I want to make the candidate very comfortable डरा के क्या फायदा I mean I don't like to scare people or ये आपकी थिंकिंग है सर, बट हाँ सब but आई डोंट थिंक ऐसा हाँ सोचते हैं. वैसे भी हम्म. I mean depends upon person to person हम्म. so maybe these are one of the few Tata values which I have got after हम्म. working for so many years Okay. and I always try to see good in people हम्म. so if I like somebody I like to see what are his good qualities definitely everybody has good and bad qualities but हम्म. you try to see good qualities and try to imbibe them in yourself even bad qualities so some things which I did not like in my earlier bosses I said okay, once I become a boss I will not do such things what I Oh. did not like so it is Hmm. with experience it is with working and all that you become Matters. Yeah. yeah. So just one clarification that nowadays a lot of people are saying कि AI आ चुका है. Now CS का काम तो clerical है. AI will take over CS. AI क्या करेगा I mean I don't believe in that yeah Hmm. definitely AI will help you a lot if today you want compliances है तो आप AI के थ्रू से you
get to know what are the latest amendments, or if you want any help, it can help you. It can help you in many ways, but it cannot take a role of a company secretary. कंपनी सेक्रेटरी ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ आके कुछ लिख लिया या कुछ किया. यू नीड टू हैव अ ह्यूमन टच. अगर किसी का फोन आया, शेयर होल्डर का आया, तो यू हैव टू सिट एंड हैंडल दैट. किसी के शेयर्स गुम हो गया है, किसी का कुछ है, तो एआई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. सो ह्यूमन टच होना चाहिए. तुम्हारा इंटरेक्शन होता है एज अ CS. You have to interact with board of directors, with other people. So I don't think AI can do that. Like I said earlier, you have to take decisions. There are a lot of things where new amendments come, what is to be done, how to interpret it. This I don't think AI can do. So sorry, but I don't believe that AI can take over the job. Definitely it's helping a lot. Today, you even simple thing like grammar. So you are framing a sentence. You are not sure, so you Google it. और आजकल चैट जीपीटी भी बहुत कॉमन है. तुम चैट जीपीटी को बोलो कि एक रिफ्रेम करके दे दो, so that can help. काफी मेल्स भी आपको अगर ट्रेनिंग्स के आते होंगे वो पक्का चैट जीपीटी नहीं लिखे होंगे. I use it. I use it. You- I use it. I'm like that. I'm very IT savvy, so I try to see. But it is, you don't have to rely on it. You have to take benefits from that. That is very important. तुम आज बोलो कि मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो मैं चैट जीपीटी पे पूरा आंसर करके मैं बाय हार्ट करके जाएगा, दैट विल नॉट हेल्प. बट यू टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और सम अदर टूल्स, you then modify it, change it, and then use it for your benefit. ओके. एक मेरे को इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन आया है दैट यू आर इन एम्प्लॉयमेंट सिंस सो लॉन्ग. डू यू एवर थॉट कि चलो प्रैक्टिस में जाते हैं? No, I was not keen to do practice. I was very comfortable being in a corporate world. So, but I would suggest many people, if they are good enough and they know that they can pull it off, then they should do practice also. But practice is a different ball game. उसके लिए तुम्हें यू हैव टू अप्रोच पीपल, Clients ढूंढो. क्लाइंट्स मिलना पड़े. कॉर्पोरेट में क्या है कि तुम एक बार जॉब में लग गए तो विथ योर हार्ड वर्क एंड ऑल यू आर स्टेबल. बट इन प्रैक्टिस इनिशियल स्ट्रगल करना पड़ता है. सो या डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विथ प्रैक्टिस, gain experience, and then also go to a corporate. That is also possible. And during my time, like I said, practicing CS का ज़्यादा कुछ था ही नहीं. सिर्फ एक एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करना रहता था. अभी इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं. For every small thing, a practicing CS would be there. Secretarial audit जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है. तो now the scope has increased. Okay. Okay, sir, one last question to you. What advice would you give to our viewers जो कि generally students है? Students को देना है views. तो focus रहो काम में. You have to first focus on your studies. Clear हो जाओ. Then focus on your work. Hard working. Curiosity. You should be very curious about what type of laws are there. You should be very thorough in your concepts. Keep yourself updated. Updation of knowledge is very important today. Because like I said, I must have said 2-3 times, but things are changing at a very rapid pace. And if you don't keep yourself updated, then it is not good. And other thing is, these are all professional exams. So you can fail. I mean, it is very common today to CS में तुमने 2 अटेम्प्ट किए, 3 अटेम्प्ट किए. मेरे जैसे कोई 8 अटेम्प्ट करता है 8 अटेम्प्ट्स के बाद. But today where I am because I had not lost hope. I said, okay, this is part of life. You do a better attempt. Next time you do more studies and all. And one fine day you will definitely succeed with whatever it is. So you should embrace challenges. You should not feel dejected कि हाँ मैं फेल हो गया, फेल हो गई and मैं छोड़ देता हूँ. नहीं, I can do it. Why you can't do it? Then you should be very ethical. Today people look at a company secretary that compliance के इंचार्ज है तो हाँ तुम ethics अच्छा होना चाहिए. So ethics है, governance है, वो सब. एंड तुम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जो भी कंपनी में, यू शुड बी अ वैल्यू एड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड एंड ऑफ द डे यू शुड बी अ ब्रांड एम्बेसडर कि हाँ कंपनी सेक्रेटरी का आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर. सो वॉट एवर आई बिहेव, द वे आई कंडक्ट, द वे आई इम्पार्ट नॉलेज, आई मीन पीपल शुड फील कि हाँ CS के प्रोफेशन में भी ऐसे लोग रहते हैं. बिल्कुल. तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
सर के पॉडकास्ट से मुझे समझा है कि पहली चीज तो सीएस में स्कोप है, काफी स्कोप काफी है, स्कोप है। एंड सेकंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, नहीं दे होना आल्सो हैव चाहिए, अ चांस। नहीं होना चाहिए, एवरीवन हैज अ चांस नेहा। या ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वाज So, सो फन हैविंग पॉडकास्ट my विद यू। pleasure, Neha. थैंक यू My सर। pleasure.